Hello guys, I am Shubham from ShubhVed Tutorials. This video is of GATE Excel PYQs 2025. Particularly, we will be solving biochemistry questions. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. First question. This is a 1 mark questions we will be solving, and then 2 mark question. Zinc is essential for the function of. डायरेक्ट क्वेश्चन है. You can see the enzyme video in the playlist of biochemistry. उसमें mention है सब, right? So this is a carboxypeptidase A. उस enzyme के लिए zinc essential होता है. Which one of the following methods separates biomolecule based on their hydrodynamic volumes? Okay, hydrodynamic volumes means what? Effective molecular size in a solution, right? मतलब solution में size of a molecule क्या है? That is hydrodynamic volume. Okay, that is hydrodynamics. So basically this is dependent on size, and size exclusion chromatography इसका आंसर होगा. Okay, not ion exchange, cation exchange and thin layer. Size exclusion chromatography. Which one of the following restriction endonuclease is a blunt cutter? Okay, अभी restriction endonuclease recombinant DNA technology में enzymes use होते हैं, right, to cut the DNA. So two types of ends are produced, right? Cohesive ends. Basically, these are sticky ends. And जो second है, that is blunt ends. तो staggered ends भी बोलते हैं, right? So from these options, it is direct that BAM-H1, EcoR1 and HIN3 all produce the sticky ends. And ये जो EcoR5 है, this produce the blunt end. Okay, I will give you a table here. Make a screenshot of this, right? So all the important enzymes used and the restriction enzymes आपको इसमें मिलेंगे. Okay, you can see यहाँ पे arrow separate है. This is cohesive, right? This is cohesive or sticky. Okay, all these are cohesive. And ये वाले जो है same arrows. This is staggered, blunt end, right? Blunt end. This is also blunt end. This is sticky. Okay, इसमें ऐसा कुछ फॉर्म होगा ना, तो sticky. And straight line है, arrows. I will write here. This is sticky and this is blunt. Right? Same arrows. यहाँ पे एक arrow, यहाँ पे एक arrow. ऐसा. इसमें तो लिखा है यहाँ पे सब. Right? So these tables help you, and I give you tables. Also remember the point here. जो ये restriction enzymes है, these are of type 2. Okay, which recognize the sequence and cut there. Which one of the following DNA repair system require DNA glycosylase? अभी DNA repair हमने डिस्कस किया है इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ओके, तो बेस एक्सीशन रिपेयर फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है, राइट? विच यूजेस DNA glycosylase.
which do the formation of AP site. Okay, AP means what? Apurinic or a pyrimidinic. Which one of the following ion channels open to repolarize the neuronal membrane when an action potential is generated? करेक्ट आंसर है रिपोलराइजेशन. ओके, जो डीपोलराइजेशन है उसके बाद रिपोलराइजेशन, उसके बाद क्या होता है फिर हाइपर पोलराइजेशन. तो हमें पता है पहले निगेटिव चार्ज होता है, देन इट गोज टू पॉजिटिव बिकॉज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इन द डीपोलराइजेशन. रिपोलराइजेशन में अगेन व्हाट हैपेंस, K प्लस गेट्स आउट. तो K प्लस चैनल, इसमें Na प्लस का रोल है, comes inside the cell. K plus goes outside. And hyperpolarization may be also K plus goes out. More negative, right? And this is less negative. तो इसका आंसर होगा K plus channel. Got it? I will tell you here more things about action potential because repeated topic है. जो resting membrane potential होता है that is -70. Depolarization में क्या होता है, Na plus positive charge comes inside, so the charge goes to +30, right? +30. Then in repolarization it goes again to -70. Hyperpolarization में -90 होता है, more negative. Okay, and उसके बाद again resting membrane potential -70. So this is the charges basically you should remember, right? हाँ, अभी तक जो हमने सॉल्व किया MCQ थे. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दिस है MCQ. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटीबॉडीज इज आर करेक्ट. इज आर मीन्स दिस इज MSQ, राइट. MSQ में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो निगेटिव मार्किंग. Okay, so now let's see the option. Different antibody classes have different effector function. Correct है. Right now, we know there are 5 classes of antibody. IgM, IgG, then IgA, IgD, E, and IgD. Okay, so everyone has their different functions. Each antibody chain consists of an amino terminal constant region and a carboxy terminal variable region. No, incorrect है ये. How? See, this is antibody. Okay, यहाँ पे N terminal, यहाँ पे C terminal, N terminal, C terminal. ये जो N terminal है, these are variable regions. And C terminal ये constant ही होता है. C for C terminal constant. Okay, these are bound by disulfide bonds. Right? एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है. So this is wrong. Next option, variable domain harbor complementary determining region. Yes, जो specific binding करता है with the antigen, right? इसमें variable domain है. Variable domain consists of CDRs, complementary determining regions. Next, all antibodies have same half-life. No. Every antibody has its own different half-life. Same नहीं होगी. Okay, so
This we have seen since our +2 level, right? जो antibodies हैं, and it is logical also because every antibody has its different function, right? अगर ये स्ट्रक्चर भी आपको पता है, then also you can answer जो N terminal है variable region है which binds to the antigen, okay, and C terminal constant region होता है. This is simple to answer. Variable domain में CDR है, that is also important for antigen binding, right? So if you know this concept antibody basics, then also you can answer this question. So option 1 and option 3 इसका आंसर होगा, right? This was the 1 mark question. Now 2 mark questions. Which one of the following molecule does not contain phosphoanhydride bond? Phosphoanhydride bond means what? It is simple. अभी ATP molecule है, तो ATP में 3 phosphates होते हैं, तो ये जो phosphate के बीच में होता है that is phosphoanhydride bond, right, between the phosphates. So now ATP molecule में 2 phosphoanhydride bonds हैं, right? वैसे ही अगर ADP molecule है, इसमें एक phosphoanhydride bond है, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP इसमें बॉन्ड होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP बॉन्ड होगा. फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, सी नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में है, राइट? अभी 1 and 6 मतलब 1 पोजीशन और 6 पोजीशन दोनों पर अलग अलग फॉस्फेट है, तो इसके बीच में बॉन्ड नहीं है, यही आंसर होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. ओके, अभी ये मॉलिक्यूल है पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट में बॉन्ड होगा. हाउ? पायरोफॉस्फेट को हम PPI बोलते हैं. So there are 2 phosphates which will be linked by phosphoanhydride bond. This question, for an enzyme that follows Michaelis-Menten kinetics, a competitive inhibitor, very important. कि ये complex होता है, but I have tried to make it easy. Enzymes के वीडियो में आपको वो मिलेगा. Okay, I have discussed this. These things are very important. जो क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट है एंड इजी है, वो ही हमने कवर किया है उसमें, राइट? सो इंक्रीजेस बोथ Km and Vmax, नो. डिक्रीजेस बोथ Km and Vmax, नो. इंक्रीजेस Km बट डज नॉट अफेक्ट Vmax, यही है, राइट? डिक्रीजेस Km but not affect Vmax, no. Okay, which of the following peptide does not absorb ultraviolet light above 250 nanometer wavelength? See, अभी does not absorb बोला है ना. aromatic amino acids, wife, okay, wife, remember the word. W stands for tryptophan, then Y stands for tyrosine, and F stands for phenylalanine. ये जो aromatic amino acids है यूवी लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, राइट? ऑब्जॉर्ब यूवी लाइट, सिंपल है. अभी जिसमें ये है ना, इसको एलिमिनेट करो. सी द फर्स्ट ऑप्शन, ट्रिप्टोफैन है,
ये ऑब्जॉर्ब करेगा, राइट, ऑब्जॉर्ब करेगा। देन इसमें टायरोजिन है, ये भी ऑब्जॉर्ब करेगा। हमें क्या पूछा है, डज नॉट ऑब्जॉर्ब। इन द ऑप्शंस थर्ड एंड फोर्थ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स एब्सेंट है, तो ये आंसर होगा 3 and 4. Okay, so easy to solve. Next question, which of the following is our peptide hormones? कैल्सिटोनिन पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है, सेरोटोनिन नहीं है पेप्टाइड हार्मोन, एज वेल एज थायरोक्सिन भी नहीं है। सेरोटोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, थायरोक्सिन थायरोजिन से। ओके, नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन। Which of the following is our heteropolysaccharides? Chondroitin 4 sulfate, yes. Cysteine, no. Cellulose, no. Homopolysaccharide है, cysteine में NAGs होता है एंड सेल्यूलोज में ग्लूकोज। हेपेरिन, yes. तो 1 and 4 आंसर होगा। ओके, दिस इज हाउ यू कैन आंसर क्विकली। ये भी हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट्स के वीडियोज में, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो इस वीडियो में हमने 1 मार्क क्वेश्चन 6 सॉल्व किए एंड 2 मार्क क्वेश्चन 5 सॉल्व किए। ओके, सो 6 1 6, 5 2 10, so this goes to 16. Okay, 16 marks का सॉल्व किया हमने of the biochemistry, right? Now in the next we will see zoology questions. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find it helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.